Welcome student. Today in this video we are going to discuss the topic Gibbs free energy and equilibrium constant. The Gibbs free energy is denoted by delta G or delta G naught, and the equilibrium constant is denoted by K. So what is Gibbs free energy? Gibbs free energy is used to calculate the total reversible work done by a galvanic cell. In the earlier videos, we have discussed about the galvanic cell. Galvanic cell is what? Galvanic cell is an electrochemical cell where chemical energy is used to produce electricity. So, by the help of Gibbs free energy, we can calculate the reversible work done by a galvanic cell. The value of delta G is negative. Okay, for spontaneous process, the value of Gibbs free energy is negative for spontaneous process. What is spontaneous process? Spontaneous processes are the process which proceed automatically. We don't have to apply any energy or any force. They will proceed automatically. Such type of reaction is known as spontaneous reaction or spontaneous process. Okay. So delta T is calculated by this formula. Delta G equal minus N F E cell. Or in standard condition, we can calculate delta G by this process. This note indicates standard condition. Standard condition means temperature and pressure are fixed. Okay. So here N indicates the number of electron. Electron involved in the process. We are taking example of some process and where we have to calculate the number of electron pass. Okay. Similarly, F indicates Faraday constant and its value is 96,500 coulomb per mole. And E naught cell we know. Then now this is for Gibbs free energy, and for equilibrium constant we can calculate its value by using this formula. Delta G equal minus RT ln K, or by using this formula. You have to remember this formula. We will use this formula. Okay, this one where the log is used. In this equation, the R indicates gas constant and its value is 8.314 Joule Kelvin mole inverse, and K is equilibrium constant we know, and T indicates temperature. Okay, and in standard condition or the normal condition, the temperature is fixed, which is 298 Kelvin. So write down the formulas and we will take an example and understand it. Okay. So first you pause the video and write the formula. So there is a question where we have to calculate delta G naught, that is standard Gibbs free energy, and K, that is equilibrium constant, for this reaction. So how we have to calculate? For calculating this, we must know the formula of delta G and equilibrium constant. So there are two formulas which we are going to use. The first one is delta G naught equal N F E naught cell. So by using this formula we can calculate the value of
delta Z naught. Since the value of n we have to calculate or we have to identify by this equation, and the value of f you must have to memorize, or you must know. We have given it that the value is 96500. E naught cell, the value of E naught cell is given. So let us first try to calculate the value of delta Z naught. Okay, so delta Z naught equal n f E naught cell. In this equation, we know that zinc is converted to Zn2 plus by releasing 2 electrons. Similarly, Cu accept 2 electrons, Cu2 plus accept 2 electrons and converted to Cu. So C, the oxidation state of Zn is 0. The oxidation of Zn2 plus 2. Similarly, the oxidation state of Cu2 plus is plus 2 and oxidation state of Cu is 0. So now see, the change in number of electron is 0 to 2, that is 2. So for this reaction, the value of n is equal to, so write 2. We know the value of F, it is 96500 coulomb per mole. Okay, but okay, don't write in last. Okay. We have to write the symbol after completion of the calculation. Okay, and the value of E naught cell is 1.1. So when we simplify it, it becomes minus 210320. Okay, and its unit is joule per mole. So इसमें से क्या निकल गया, G का वैल्यू निकल गया. अभी क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को कैलकुलेट करना है G एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K. तो ऐसा इक्वेशन एक है जिसमें G और K की इक्वेशन में है. ऐसा इक्वेशन एक है जिसमें हम लोग लिखा था G नॉट इक्वल माइनस RT बाय log K. इसका वैल्यू अभी हम लोग कितने कैलकुलेट किया है, कितना होगा वैल्यू, माइनस 210320 इक्वल R का वैल्यू कितना है 8.314, T का वैल्यू है 298. We have to calculate K, so write log K. यहाँ पे हो जाएगा 210320 इक्वल माइनस इसमें होगा 5705.85 log K. दोनों साइड मिलेगी, माइनस है तो इसको काट दो. इसके बाद लिखो log K इक्वल 21320 बाई 5705, ये होगा. इसको सिंप्लीफाई करने से क्या निकलेगा, log K इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करने से आता है 36.86. हम लोग को log K नहीं निकालना, हम लोग को निकालना K का वैल्यू. तो क्या होगा, K इक्वल क्या हो जाएगा, log को इधर लेके जाना है. log को इधर लेके जाने से इसमें हम लोग लिखेंगे एंटी लॉग. ठीक है, और एंटी लॉग का वैल्यू तुम लोग का बुक का लास्ट में दिया है, उसको देख लो. और नहीं तो हम लोग एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जहाँ पे लॉग और एंटी लॉग के बारे में होगा. ठीक है, तो इसमें क्या का निकालना है, एंटी लॉग 36.86
86। इसका एंटीलॉग कैसे निकालते हैं? देखो एंटीलॉग किसी का भी क्या होगा, जो पॉइंट का आगे डिजिट है उसको हम लोग 10 का पावर में लिखेंगे। जैसे अगर इसमें क्या है डिजिट 36 है तो 10 का पावर लिख दो 36, और बुक का लास्ट में लिखो जहाँ पे 86 लिखा होगा, लॉग टेबल लिखे बुक में। The last page of your book there is a logarithm and anti-logarithm table. In the anti-log table, see the value of 86. The value is given, which is 7244। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डिजिट का बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो ये हो गया एंटीलॉग का वैल्यू। और ये वैल्यू को कुछ याद नहीं करना है, तुम लोग को एग्जाम में वैल्यू दिया जाएगा या फिर लॉग टेबल को दे देगा। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग एक दूसरा वीडियो बनाएंगे अलग से, जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटीलॉग। फिलहाल इसको याद रखो, प्रोसेस को याद रखो कैसे करना है, ठीक है? Okay, thank you students. In the next video we will see another numerical, and we will also see how to calculate log and anti-log. Okay.